Namaskar and welcome to the 5th episode of MOM मिथुन ऑन म्यूचुअल। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। ये टॉपिक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर एंड अ बेटर पर्सन। अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ। हम क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देन वी शुड फोकस ऑन हमें क्या बनना है। यूजुअली वी ओनली फोकस कि हमें क्या बनना है रादर देन टू अंडरस्टैंड हम क्या है। सो इन इन्वेस्टिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के व्हाट आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। यहाँ पे हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें ये फोकस नहीं करना है कि हम कौन से टाइप के इन्वेस्टर है। डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बट पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। What are their advantages, what are their disadvantages। और वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टिप भी शेयर करूंगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी एंड बिल्डिंग वेल्थ। ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू टू सी माई 3 वीडियोज़ जहाँ पे मैंने बात की है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, जैसे कि बिगिनर, मैच्योर एंड प्रो। ये वीडियो भी ज़रूर से देखिए, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर। ऑल्सो जो अभी मेरी नई बुक आ रही है M2D मनी मैनेजमेंट डॉक्ट्राइन, वो बुक में भी मैंने टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर पे एक चैप्टर कवर किया है। सो सबसे पहला इन्वेस्टर है कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टर, फाइनेंशियल दुनिया का एड्रेलिन जंकी। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर वेरी फास्ट एंड दे आर ऑलवेज ईगर to look for the next big opportunity, the next big thing। वो काफ़ी एक्टिव होते हैं एंड यूजुअली अगर आप न्यूज़ चैनल देखिए या वीडियो देखिए या आर्टिकल्स देखिए, दे फॉर्म द लार्ज पार्ट ऑफ द ऑडियंस बिकॉज दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर इंफॉर्मेशन। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर स्किल्स एंड कई बार तो वो अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। नो डाउट उनका जो एंथुसिज्म है वो काफ़ी रिमार्केबल है, बट उनको एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि दे शुड नॉट टेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ इमोशन। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज द मेजर्ड इन्वेस्टर। दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स अप्रोच देयर इन्वेस्टमेंट्स विथ प्रिकॉशंस। बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस they do lot of research and analysis. They are never in hurry. In fact, they believe that slow and steady approach is very beneficial in long-term wealth creation. So they are patient, they are vigilant and they are very calculative. Major investor अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लास एंड दे यूजुअली डोंट गेट कैरिड अवे बाय मार्केट हाइप। देयर विजन एंड प्रोग्रेस इज लॉन्ग टर्म। Yes, their portfolio may not be making big returns, but they definitely achieve stable and strong financial growth. अब मिलते हैं reluctant investor से। इस टाइप का जो इन्वेस्टर होता है, he is not comfortable with volatility in the returns. They prefer predictability over volatility. They want assurity, they want guarantee. Market volatility से they tend to stay away, they are not comfortable. Usually they tend to keep their money into savings accounts, fixed deposits, government bonds, guaranteed plans। वैसे प्रोडक्ट्स में वो इन्वेस्ट करना प्रीफर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर। वाई? यस, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, डेफिनेटली होता है, बट नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। सो बेसिकली one needs to focus on investments to generate real return. This type of investors should take advice of a professional advisor and they should start with conservative options or moderately conservative options. जैसे कि अगर वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो they should start with hybrid funds rather than going into pure equity, and they should definitely avoid sectors and thematic funds. Reluctant investor is always afraid to take decision and they want to outsource that decision. Usually they don't want to take decision, they want that someone else should take the decision so that in case of bad outcome they can blame someone. So they are always reluctant to take a decision, they are reluctant to take risk
and they are not comfortable with volatility, and they end up into savings but not investing, and many times miss out big wealth creation opportunities. एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है रिलक्टेंट इन्वेस्टर का, दैट इज दे आर ऑलवेज इन डाउट, एंड दैट इज वाई दे रिक्वायर अ गुड एडवाइजर who can assist them in taking right decision and taking calculative risk. और लास्ट में आता है अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टर, वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टर. रिलक्टेंट इन्वेस्टर जो होता है वो सेविंग्स करता है, उसका फोकस सेविंग्स पे ऑलवेज होता है. बट अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टर को ना सेविंग्स से लेना देना है ना इन्वेस्टिंग से लेना देना है. दे टेंड टू लिव इन टुडे, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट टुमारो, और दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट टुमारो. उनके लिए ग्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दे आर वेरी मच इंक्लाइंड ऑन स्पेंडिंग, ऑन पेम्परिंग देमसेल्फ, शोइंग ऑफ एंड मिमिकिंग अदर पीपल. तो वो आज में जीते हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी प्लान. उनका जो भी डिसीजन होता है वो इम्पल्सिव डिसीजन होता है. सो दे आर नॉट रनिंग द लाइफ, लाइफ इज रनिंग दैम. दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स टेंड टू इन्वेस्ट only and only because of FOMO, fear of missing out. They tend to see their neighbor or their friend or their family making some good returns, and उनको लगता है कि चलो हम भी कर देते हैं, right? Or some bank or agent approach to them with some good strong past performance product, और उनको लगता है कि अरे I missed out, let me also capture this thing. तो इनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी होता है वो बहुत रैंडम होता है, and it is usually influenced by the outside circle rather than from inside. This type of investors should definitely focus on financial planning. They should contact a good financial planner. They should understand the importance of financial planning. They should get their financial planning done. And also they need to have a good mentor, a good coach, because यहाँ पे internal fire नहीं है, right? So there needs to be some outside force to guide them. They are always guided by some outside force. So a good mentor, a good coach is very important for an unprepared investor, and they should definitely dedicate themselves towards financial education. Again, here they have to rely on someone, because they will never focus on self-study, self-help. So these are the 4 types of investors. Now you check आप कहाँ पे फिट होते हो, and be honest to yourself. Also, in case you are still confused कि what type of investor you are, don't worry. With time and with knowledge, definitely you will get more clarity कि आप कौन से टाइप का इन्वेस्टर हो. This is not a one-time job and this is not a overnight job. And अभी का अभी डिसीजन लेना कोई कंपल्सन नहीं है. In fact, any investment decision should not be spontaneous. You should think about it. तो आप इस पे सोचिए आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो. यहाँ पे मेरा मानना है कि पर्सन नीड्स टू बी अ बैलेंस इन्वेस्टर. यानी समटाइम्स यू नीड टू बी कम्पिटिटिव, समटाइम्स यू नीड टू बी मेजर्ड, एंड समटाइम्स यू नीड टू बी रिलक्टेंट. तो सबका ट्रेट अपने में लाना इम्पॉर्टेंट है. So rather than trying to be one, why don't you look into what are the strong points and try to include those all strong points into a balanced investor. तो बैलेंस इन्वेस्टर बनने पे फोकस कीजिए, बेस्ट इन्वेस्टर बनने पे फोकस मत कीजिए. बेस्ट पे फोकस करने से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है और बैड डिसीजंस बढ़ती है. बट लाइफ में बैलेंस अचीव करना सिंपल है, इजी नहीं है बट सिंपल है. तो ट्राई टू बी अ बैलेंस इन्वेस्टर. सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? वेल, try to understand, or I would say it is very important to understand what type of investor we are, what are our strengths, what are our weaknesses, and what we want to become. And we should focus on becoming a balanced investor. And if you have taken any bad investment decision, or if you have some bad experience with investing or saving, so don't stop. You may have a bad experience, but that should not be a reason not to invest, not to save. Try to learn from your bad experience. Try to learn what led to this bad experience. Always be a learner.
Wealth creation is a constant journey of discovering our own self and constant learning. It is a never ending learning journey. So be balanced. कभी रिलक्टेंट बननी है तो कभी कंपिटिटिव बननी है तो कभी मेजर बननी है, बट नेवर बी एन अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टर, बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ प्लान यू विल बी इन समवन्स एल्स प्लान. अगर आपके पास आपकी लाइफ का खुद का प्लान नहीं है तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ समवन्स एल्स प्लान, वर्किंग to satisfy someone else's life and someone else's plan. So be a balanced investor. Till then, see you and goodbye.